Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. I'm back to being who I was, and it's because of this interaction. तो उसने बता दिया था कि मैं एक्टर हूँ यार, है ना? मुझे बच्चा मत समझना कि मैं एक्टर हूँ। अगर तुम्हारे में दम है तो मतलब सामने आ जाओ, मतलब मुझे बच्चा मत समझना। Sudhir Nawaz, welcome to Film Companion. Congratulations on Serious Men. Thank you. Sudhir, I want to start with you. Manu Joseph's novel is witty, it's dark, it's also in places very cruel. And I felt that you, of course, changed the plot a lot, but you've also given us a more humane view of the world. And I was wondering if you could talk a little bit about how you decided what changed, what to be about, to sort of control the cruelty a little bit. I found this character of Ian Money fascinating, and that he doesn't play victim. I found the story of the father and son really interesting. I found the wife very interesting. I found all the other characters, and I tried not to even make even the minister or the daughter of the minister, the builders. I tried to find something in them. Their compulsions were not just monetary, but they were moved by other things as well. So I just tried to make a film which reflected my view of the world, and which is not that good. More human. I'm the guy who made Hazaro, so I think after Hazaro I connected again with the story, and I really connected with it. And I think it's because of Netflix and because of the script, because of my scriptwriter Bhavesh, because of Manu, it made me again a filmmaker. I'm back to being who I was, and it's because of this interaction. I mean, I think it's amazing. I really am very grateful. I was first grateful to Jani Vidyaro for bringing me into cinema. Then I was grateful to some films and some subjects because they allow you to do things. And now I'm grateful to Netflix and Serious Men to allow me to make a film that kind of reflected me as I was now. I don't have children, but I mean, I connected very deeply to this father and son story. And this Ian's desire and this whole... it's kind of mad. I mean, it's crazy, the idea of 4D, 2D, how you can... it takes 4 generations to be able to relax by a pool and not do anything. It takes a while, and I think that's really important, and it connects with all of us. I mean, as Indians, for instance, we find it difficult not to do anything. Leisure for Indians is not a fundamental right. I don't think Indians as a whole have reached that 4D stage. We feel very guilty when we don't work. Yeah. But I totally agree. Ian Money is a fascinating character. And Nawaz, I have to ask you, because here's a guy who's doing some terrible things. Okay, लेकिन फिर भी जो viewer की sympathy है वो जुड़ी रहती है Ian के साथ. Somewhere even you want him to get away with it. You want him to win. Okay, and I was just wondering कि as an actor ये balance रखना कितना मुश्किल था, because he does awful things, he is cruel, लेकिन फिर भी we never stop being emotionally connected to him. जब भी कोई आदमी कोई भी मूव लेता है, उसको लगता है कि वो करेक्ट है, उसके हिसाब से करेक्ट है. और मे भी शायद इतना एंग्स उसको था, इतनी सारी चीजें थी उसके माइंड में कि जनरेशन टू जनरेशन, दादा परदादा का जो एक एंग्स होता है कि यार हम लोग कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन मैं अपने बेटों को वो सब कुछ दिलाना चाहता हूँ जो वो देखता है इंस्टीट्यूट में. लाइक जैसे आचार्य है, तो आचार्य से बहुत फैसिनेट भी है इस चीज को लेके, जिस जगह पे वो है, जो उसका एटीट्यूड है या जिस पोजीशन पे वो है, हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते. मे भी शायद उसको ये बाय हुक बाय हुक वो चाहता है कि उसका बेटा उस पोजीशन, मैं तो नहीं पहुंच पाया लेकिन मेरा बेटा जरूर पहुंचे. उसके बदले में आदमी जो भी करता है वो ये सोच के करता है कि कहीं ना कहीं मैं ठीक हूं, क्योंकि इतने सालों से हम लोग, और एक वो भी एंग्स भी है उसको उस चीज का कि दादा परदादा के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, फादर के साथ जो एक्सपीरियंस, वो बेटे के साथ नहीं लेना चाहता. अगर एक लीप या 2 लीप मुझे लेनी पड़े जनरेशन
दो जनरेशन आगे मुझे पहुंचना पड़ा अपने बेटे को लेके, तो उसको लगता है कि ऐसी कोई बुराई नहीं होगी उसमें, बट वही है कि अगर जो वो गलत, जैसे कभी कभी आप बोलिए कि क्रुएलिटी, वो एक उसकी वही ब्यूटी भी है, वही इनोसेंसी भी है। वही या हाँ। या तो टेल मी, जब जब आप ये इस कैरेक्टर का सुर ढूंढ रहे थे, तो what kind of conversations did the two of you have? Because I also read, नवाज, कि आप 20 साल पहले आपने सुधीर से मिलने की कोशिश की थी. You are a big fan and this is a dream come true for you. तो when you sat down and both of you said कि you know this is our Ayan Mani, तो किस टाइप की conversations थी कि वो ये कर सकता है लेकिन ऐसे मत करना? हाँ, उसमें जब हम लोग दिल्ली से आए थे तो हमारे दिमाग में 2-3 ही डायरेक्टर थे, जैसे सर थे, गोविंद निहलानी साहब थे और रामगोपाल वर्मा, इस तरह के डायरेक्टर्स दिमाग में घूम रहे थे, जो हमें लगता था कि हमारी रीच में हो सकते हैं, क्योंकि उसी तरह के हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे उनके साथ काम किया था इन्होंने, तो हमें लगता था कि हमारी रीच हो सकती है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं टाइप में, ऐसा हमें लगता था। दूसरा ये कि सर की मैंने जो खास बात देखी वो ये थी कि सेट पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसका अय्यन मनी के बारे में, एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि सुधीर सर का जो है ना, बहुत ही रीजन और बहुत ही लॉजिकल कैरेक्टर को लेके चलते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि भाई गैलरी को खुश करने के लिए उसमें थोड़ा सा इमोशन भी डाल दें और थोड़ा सा ये डाल दें वो डाल दें उसका करके कि इंटरटेनिंग कैरेक्टर हो जाए, वैसा नहीं। तो जो एक्चुअली रीजन है उसका, जो जो लॉजिक है, जिस लाइन पे उसको चलना है उसी लाइन पे चलता रहे। जैसे एक सीन था जब मैं पेंटिंग गैलरी में बैठा रहता हूँ, एग्जीबिशन गैलरी में बैठा रहता हूँ, तो मेरा वो उस पार्ट के को लेके मेरा थॉट था कि बहुत ही इमोशनल होगा मे बी शायद ये सीन, तो उसको इमोशनली करूंगा, क्योंकि एक्टर का होता है कहीं ना कहीं वो खुद से वो हो जाता है, सिंपैथेटिक हो जाता है, दुनिया भर के उसके फ्रस्ट्रेशन होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, वो सीन में लाना चाहता है, बट एट द सेम टाइम सुधीर सर ने वहीं पे मुझे वो रोका। एंड वी थिंक बहुत सारे डायरेक्टर होते तो शायद ये बोलते थे कि हाँ वहां पे सैड सीन हो सकता है, सैड हो सकता है, क्योंकि he is going back to his nostalgic life, ये वो सब क्या क्या झेला, बट सर ने लॉजिकली मेरे को वहीं पर रोका, विच इज आई थिंक मुझे वो चीज बहुत पसंद आई, थैंक गॉड कि वो बच गया, अदरवाइज मैं गलत ट्रैक पे जा सकता था। तो ये कैरेक्टर के डिस्कशन हुए, किस लाइन पे लेके चलना, उसी पे फिर हम लोग चले। एक्चुअली आई हैव टू टेल यू कि वो सीन बहुत ही इफेक्टिव है बिकॉज यू आर नॉट ओवर इमोशनल। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। It really hits you because you say it so matter of factly कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ और ये हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसी सीन में मेरा ये हो रहा था कि शायद इसको मैं सैड कर दूं, सैड हो जाना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से ये कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो एक एक्टर का होता है कि थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक ना, अगर उसको टोका ना जाए तो रॉन्ग ट्रैक इख्तियार कर लेता है, चला जाता है उस पर। अच्छा, और जो बच्चे के साथ सीन्स थे, so those were very tough. I mean, those are also, you know, scenes where he's so good in the film. For both of you, you know, how tough was that? Because there's scenes where Ayan, even though he loves his son, he's being very nasty to him. How did you construct those scenes? First of all, you know, when you have a kid, you know, if he doesn't work, I mean, you just have to, there's not, I mean, the kid has to have a natural proclivity for what that film has to get him to do. You can't force fit a kid into a film, right? You know what I mean? And so, I mean, we worked a lot. I mean, with Mukesh Chabra, we kind of at least tested 100 kids. Then we found him in Chennai. Right? And then we did about a 3-month workshop with him for language, whatever. And he was, I mean, I have never seen a kid like this. I mean, we always said, acha, 2 ghante, you know, we can work only these 2 hours. You know, Netflix has their policy, how you work with children, how much homework he has to do, how much school, whatever. This kid only wanted to work. He would get really upset when we didn't work. I mean, he would get really bored. And he was professional. I mean, so if you talk to him in a way that you talk to any other actor, he kind of gets it in a very instinctive kind of way. He will not be able to articulate the response verbally, but you know, when he's doing it, he's bang on there. You know, I mean, he's so brilliant, and his mother was very helpful. He and his mother shared some
out of this world bond. There was some kind of a or the mother and son are like, so what you can't get to him if you explain to the mother that, this is what I want him to do. And then maybe there is a lingo that she knows to talk for him to do. I mean, she was there all the time. And I found it really difficult. I've never had a work with a kid in a main part like this, where he's so central. And I was really, really worried about that. But this kid was like a professional actor. And he, after a while, I was no longer afraid, because sometimes you're afraid of emotionally scarring a child. Like when Nawaz goes at him, and so you're really afraid of doing what? How do you, for me personally, because, but he was like, he would go for it and he used to tell me, uncle, don't be worried, don't worry. It's only acting, uncle. So he was fascinating. I've never seen a kid like that. I would love to watch his growth. What happens to this kid? But Nawaz, आपको कभी डर लगा? When you're in those scenes, वो जो specific scenes थे, when you are very harsh with him, तो as an actor, do you have to hold back a little bit क्योंकि वो इतना young है? एज एन एक्टर तो नहीं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग लगता है कि यार कभी कभी अगर मैं उसकी जगह पे हूं तो शायद मैं ना कर पाता ऐसा, बट अब चूंकि कैरेक्टर तो डेफिनेटली करना पड़ेगा. बट मुझे जैसे सुधीर सर बता रहे हैं, वो उसके साथ जो था ना, उसने मुझे डे 1 या डे 2 या डे 3 में ही वो ऐसा मुझे रिस्पॉन्ड दे दिया था कि मतलब उसने बता दिया था कि मैं एक्टर हूँ यार, है ना, मुझे बच्चा मत समझना कि मैं एक्टर हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तो मतलब सामने आ जाओ, मतलब मुझे बच्चा मत समझना, काइंड ऑफ एक ऐसा रिस्पॉन्स उसने मुझे दे दिया. तो मैं हमेशा इस चीज को लेके हमेशा डरता था कि ये मुझे एज एन एक्टर इसके साथ काम करना है, एज ए किड नहीं. Correct. क्योंकि वो सारी चीजें, हर चीज वेल प्रिपेयर, जैसे हॉलीवुड के एक्टर होते हैं, प्रिपेयर होके आता था वो. और मतलब इस तरह का इतनी कम उम्र का बच्चा मैंने ऐसे इतना प्रोफेशनल मैंने देखा ही नहीं आज तक. मतलब लाइन्स को प्रिपेयर करके, और जो सर बताते तो उसको इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था. वो ऐसा लगता था कि जैसे मेरी समझ में आता है, मेरी शायद कभी कभी समझ में नहीं आती होंगी कोई बात सर की, बट उसको पूरा समझ में आता था. पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ मे बी शायद बिकॉज ऑफ हर मदर, हिज मदर के, उसकी मदर की वजह से, कि भाई उसकी जो परवरिश है, जो माँ ने उसको बच्चे को पाला है, वो कमाल है, अमेजिंग है. वो बच्चा कमाल है और कुछ और ही है. Tell me, both of you have always made films जो mainstream से थोड़े अलग हैं. Films that are commercial but complicated. Is the current environment now, is it even harder to be the artist that the two of you are? मतलब और ज्यादा भी मुश्किल होगी अब, क्योंकि socio-political climate has become so polarized, to be authentic to who you both are as artists? I don't know. I mean, if you start worrying about it, then, I'm not a sensationalist filmmaker. So I would not, I'm more worried, I make films more about issues or things that worry me. I mean, I don't know how to put it, but, there are people who are very direct filmmakers. Like, they take on a problem and then they go for it, actually blunt. I'm not that kind of filmmaker. I mean, like, even when I made Hazaaron, it's a gentler film about a time, right? So I don't know. That's my proclivity, and I decided from this film onwards, because I stopped making films for a year or so and thought about it. From this film onwards, I am going to only films that I can. And from now on, this is my view of the world. And if I cannot put a shot if it does not express what I want to say or in some way connect with what the whole thing is happening. I'm not worried, whatever happens, I guess. But and I took what is happening, and I'm sort of
political, and I come from a political background, and my family is connected with the freedom movement in India. And so those things are some things that I feel about. So I mean, how can you disconnect from? Otherwise, you wouldn't be able to make films. But will I make? I mean, I don't make sensationalist films. I look at the other perspective. Every film must contain the opposite also. Everything must contain its opposite. So if Ian Money is like a character, if Ian Money is a human good guy, he also contains. He can talk to a child in another sort of way, and he carries the seeds of some other evil inside him, which he controls. So I mean, I think life is a graph, and not a binary like that. So I think if you make films like that, I don't know. Let's see. I mean, it depends on where it goes. Why should you try and anticipate it? नवाज आपके लिए सी मुझे ऐसा लगता है कि जो एज एन एक्टर मेरे लिए मुझे लगता है कि ये इस तरह का कैरेक्टर है और मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस कैरेक्टर को करके, थोड़ा अनकंफर्ट जोन मिलेगा, मैं वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं इतना फिल्म के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इतना उसमें सोच नहीं पाता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरा बहुत ही कि एज एन एक्टर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, वो किस वक्त पे रिलेवेंसी है उसकी या नहीं है, इतना मैं तो नहीं सोच पाता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। Okay. Sudhir and Nawaz, thank you so much. I really appreciate it. And once again, congratulations on the film. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.